क्या आप भी कानूनी जजमेंट्स को समझने में घंटों लगाते हैं? ये काम अब आसान हो सकता है। पेश है लेक्स जीपीटी, एक ऐसा एआई टूल जो आपको किसी भी कानूनी जजमेंट को सेकंड्स में डिकोड करके समझने में मदद करेगा। चाहे कोई भी कानून हो, कोई भी जजमेंट हो, लेक्स जीपीटी आपको देगा सटीक और तेज विश्लेषण। और खास बात, आपको मिलेगा फ्री स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉम्प्ट जो आपके एनालिसिस को और भी बेहतर बनाएगा। अब समय बचाइए, काम कीजिए स्मार्ट और बढ़ाइए अपनी सफलता की संभावना। लेक्स जीपीटी किसी भी कानूनी जजमेंट को समझें तुरंत और आसानी से। अभी खरीदें और आजमाइए। टैक्स लॉ से परेशान हो? अब चिंता की कोई बात नहीं। लीगल लेंस है ना? टैक्स लॉ अपडेट्स समझने में घंटों लगा देते हो? लीगल लेंस टैक्स एडिशन सब्सक्रिप्शन लो, सबसे आसान और जबरदस्त तरीका अपडेटेड रहने का। हर महीने नए टैक्स केस लॉ अपडेट्स सीधे आपकी स्क्रीन पर। मुश्किल भाषा को कहो बाय बाय, हम कठिन शब्दों को आसान भाषा में समझाते हैं। इंटरेक्टिव चार्ट्स, विजुअल्स और वीडियो एक्सप्लेनर्स के साथ सब कुछ बिल्कुल क्लियर। रियल लाइफ केस स्टडीज से सीखो और टैक्स एक्सपर्ट्स से प्रैक्टिकल गाइडेंस पाओ। चाहे आप सीए हो, सीएस हो, वकील हो या टैक्स कंसल्टेंट, बस एक क्लिक में अपना काम आसान करो। लीगल लेंस टैक्स एडिशन सब्सक्रिप्शन आज ही लो और हर अपडेट से आगे रहो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्पेशल लॉन्च ऑन फॉर लिमिटेड टाइम के लिए। अभी एनरोल करो। स्मार्ट टैक्स अपडेट्स और आप भी स्मार्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीए मनोज लांबा। आज के शाम के इस शॉर्ट वेबिनार के जरिए हम नए इनकम टैक्स विधेयक, नए इनकम टैक्स बिल 2025 को किस प्रकार से एआई की मदद से आसानी से लर्न कर सकते हैं, रीलर्न कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी वित्त मंत्री महोदया ने संसद के पटल पर नया इनकम टैक्स बिल 2025 रख दिया है। लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी के बाद ये, जब इसे राष्ट्रपति महोदया की कंसेंट मिल जाएगी, ये कानून बन जाएगा। और जब ये कानून बन जाएगा तब ये पुराने आयकर अधिनियम 1961 को रिप्लेस कर देगा, परिवर्तित कर देगा और संपूर्ण भारतवर्ष में नया आयकर अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इनकम टैक्स अधिनियम को पुराने ढंग से पढ़ा है। पुराना ढंग क्या होता था पढ़ने का? हम एक्ट की कॉपी लेते थे, रूल्स की कॉपी लेते थे और एक्ट और रूल्स की कॉपी के जरिए उस किताब को पढ़ के ये समझने की कोशिश करते थे कि कानून के प्रावधान कहना क्या चाहते हैं। लेकिन आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हमें कुछ नया करना है, नए ढंग से सीखना है और इस नए भारत की बदलती हुई तस्वीर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक नई तस्वीर बनानी। तो मैंने एक टूल डेवलप किया है, जीपीटी टूल, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर टूल, जिसको यूज कर आप लोग नए आयकर बिल को समझ पाएंगे। तो आज के इस वेबिनार का रखने का पर्पस, किस तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर नए आयकर बिल को, जो जल्द ही कानून बन जाएगा, समझे। तो दोस्तों, without wasting much time, I want to share my screen with you. फ्रेंड्स, जल्दी से लिख के मेरे को चैट एक बार बता दीजिए कि क्या आपकी स्क्रीन पर मेरी वेबसाइट विजिबल है। Whether my website is visible on your computers, laptops or phones, iPads, please, I am waiting for your comments so that I can start giving demonstration ki how we can use AI in reading the new income tax bill.
Yes, anybody, please tell me by writing in the chat box. Is it visible? Otherwise, I will presume that it is visible. At least one participant give me the idea whether it is visible or not. Please tell me whether it is visible or not. I presume, because it is visible to me, so I presume it is visible to all. So let's start the discussion. For using this tool, you have to explore our website, that is www.gyaan.com, and then you have to check on this GPT store. You have to go to this GPT store. When you go to this GPT store, you will found in the new launches, new GPT Bizz Gyaan launch, new income tax bill, AI GPT on new income tax bill 2025. More than 1000 prompts we are giving free to understand it. So after buying it, the start button is activated. You can click on that start now button. When you click on start now button, it will ask you to go to continue. When you continue, this kind of dashboard appears on your screen. Here you put any queries. What you have to do, like I am writing query, how new income tax bill 2025 is different from Income Tax Act 1961. As and when you put the prompt, it will give the answer. No need to read that. And complete reply. The new income tax bill introduces several changes compared to the Income Tax Act. Here are come these differences. In the new bill, the chapters and sections are substantially reduced. In the old Income Tax Act, there are 47 chapters and 819 sections. Whereas in the new proposed bill, there are only 23 chapters and 536. And the terminology of previous and assessment year, we are very well versed. We will better understand now what is the previous year and what is the assessment year. But the concept of previous year and assessment year has gone away. It is replaced by tax year. Then consolidation of provisions. Many provisions are consolidated. Like I am giving you an example, like section 44 AD of Old Act, 44 ADA of Old Act, and 44 AE of Old Act, which deals with the presumptive taxation scheme for special assessees. 44 AD deal with businesses, eligible businesses. 44 ADA talks about presumptive scheme for specified professionals, and 44 AE talks about presumptive scheme for the people who are engaged in the business of playing, hiring, and leasing goods carriages. Now, all these three presumptive sections, which are applicable for resident Indians, now merged in a single section, a single clause, proposed clause 58. So 44 AD, 44 ADA, 44 AE is replaced by a new section. So it is talking about that. Then reduction in text, 5.12 वर्ड से 2.6 लाख वर्ड रह गए. वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा सेम रहेगी जैसे कि 2025 के बजट में थी. हमने इस एक्ट में एग्जम्पशन रिलेटेड प्रोविजंस को स्ट्रेट फॉरवर्ड डाल दिया है. एग्जम्पशन और रिलेटेड प्रोविजन जो पहले 30,000 शब्द घेरते थे में परिभाषित थे, अब 13,500 वर्ड्स होंगे. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर बनाने की बातें की गई हैं, प्रोसीजरल चेंजेस की गई हैं, मैपिंग और ट्रांजैक्शन की गई हैं.
तो एक शॉट में हमने एक प्रॉम्प्ट दिया था, मैंने एक लाइन में पूछा था कि नया इनकम टैक्स अधिनियम किस तरह पुराने है अलग है, तो इसने आपको आंसर दिया। अब मैं इसको कुछ और कहता हूं, मैं पूछता हूं कंपेयर द टैक्स ऑडिट provisions of old law versus new bill. Section 44 AB versus 63. Do the thorough analysis. Any query, any commentary you can do from that. So it is doing the comparison for you. First it is telling old section 44 AB, then it is telling section 63 to you. It is doing thorough analysis. Just in one click, you will get anything. Similarly, sections 68, 69A, 69B, 69C, 69D is replaced by clauses 102 to 107. So here I will give the prompt here. Please elaborate me on section 68, 69A, 69B, 69C, 69D, 69A in new bill as per new proposed bill, and click on the prompt. देखिए सेक्शन 102 to 107, no need, just comparison, compare the old law versus new law, everything is here. What is the objective, what is the provision, what is the change. Similarly, if I ask it, please discuss in detailed manner the provisions of tax audit in new bill, whether definition of accountant remain intact. I ask a query. Threshold limit same. Audit report format soon to be notified. Definition of accountant largely intact. No change in that. So every query of yours, it is capable of replying. As you know, in the new bill, all the provisions, all the provided that clauses, all the explanations, and all the definition below the sections has been removed. In the new bill, there is no proviso. You will find not even a single proviso in new bill. Similarly, you didn't find any explanation. Similarly, you will not find any definition below the section. It will found only in the definition chapter. So you want to know that how many provisos and explanation
has been removed by new proposed bill. How many? Approximately 1200 provisos have been removed and more 900 explanation has been removed. So your entire research, your entire study has been made easier. One more thing I will show. The new law, the new proposed bill is introducing the concept of tables. Everything is presenting by way of table and schedule now. So one more question I am asking it. How many schedules and tables in new law? It has given a literally wrong reply. We are giving a training. It is 16 schedule. It is mentioning 15. One it has missed somewhere. There are 16 schedule. Here it is given wrong reply. I am also agreeing that it is just launched. It is in the beta version. More and more people use it. It become more user friendly. So in the new act, in the new bill, there are 16 schedules and more than 40 tables. तो एक उदाहरण से बताना चाहूंगा, जैसे हमारे एग्जामिनेशंस का सेक्शन होता था, 10 सेक्शन के अंदर बहुत सारी सब क्लोसेस थी, बहुत सारी सब क्लोसेस थी. अब ये हारी की हारी क्लोसेस सेक्शन 10 तो एक ही है, लेकिन ये हारी की हारी आपको एग्जेम्प्ट इनकम के शेड्यूल में मिलेंगी. तो मैं कहता हूं प्लीज टेल मी द शेड्यूल of new income. Tell me the schedule of new schedule of exempt income in new proposed bill. शेड्यूल नंबर बताइए मेरे को exempt income का. Schedule 2 is talking about exempt income. All the agriculture income, specific allowances, income of charitable institution, income of political parties, international organization, NRI, scholarship grant, dividend interest, all incorporated in that. Whether the taxation of trust has been replaced with the word registered non-profit organization in new bill. आपको पता है ट्रस्ट वर्ड का आपको ही मतलब नहीं रहा. पहले हम ट्रस्ट के टैक्सेशन की बात करते थे, अब ट्रस्ट और सोसाइटीज और अदर्स वर्ड को खत्म कर इनकम टैक्स के नए बिल में एक वर्ड आ गया है, रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशन जो पहले ओल्ड लॉ में मिलती थी, वो केवल अब रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगी. ट्रस्ट और सोसाइटी वर्ड अब नए बिल से गायब है. तो ऐसी गहन और बारीक अध्ययन करने में भी ये जीपीटी कैपेबल है. आपके हर सवालों का जवाब देगी, आपका हर कंपैरिजन करेगी. कोई सेक्शन फाइंड आउट करना है, उसका कंपैरिजन करेगी. लाइक कंपेयर एग्रीकल्चर income concept in old law versus new bill. Click. सेक्शन 21A में डिफाइन थी पहले, अब
नए इनकम टैक्स में सेक्शन 2 अब सेक्शन 5 में डिफाइन है। तो ये पूरा का पूरा आपको नोट दे देगी कि क्या इसमें चेंज हो रहा है, कैसे आप इसको सही से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने एक ब्रीफ डेमो आपको देने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको अब ये भी बता दूंगा, यस नाउ इट्स देयर, स्क्रीन इज विजिबल। थैंक यू नरेंद्र जी। अब साथ ही साथ मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि इस जीपीटी को ट्रेंड करने की जरूरत है। जितने से जितने ज्यादा लोग इससे सवाल करेंगे उतनी जीपीटी ये ट्रेंड होती जाएगी। हमने ये हालांकि बहुत लार्ज डाटाबेस देने की कोशिश का है। मैंने ये इनकम टैक्स एक्ट दिया है, मैंने ये नया बिल दिया है, मैंने इसे FAQ दिए हैं, मैंने इसे प्रेस रिलीज दी है, और वट एवर मटीरियल अवेलेबल ऑन दी income tax website with regard to this new income tax bill has been already mapped to this GPT. So it is capable of giving all the replies to your question, provided that you ask so many queries as it is. Generally, what happens in the GPT subscription, there is a limit on asking of questions. For keeping the no limit on the asking of prompts through the GPT, we keep the model of asking as many queries as you want to ask. इस जीपीटी से केवल एक ही जीपीटी हमारे पूरे जीपीटी स्टोर में ऐसी है जिसे मैंने यूजर्स के लिए यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए और इसे और ज्यादा ट्रेंड करने के लिए यूजर्स को परमिशन दी है कि 1 महीने में आप इससे जितने चाहें सारे सवाल कर सकते हैं। 24 घंटे बैठे रहिए, 24 घंटे रिसर्च कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, ये आपको मना नहीं करेगी। यू कैन आस्क एज मेनी एज क्वेरी एज यू वांट टू आस्क, कोई लिमिट नहीं लगाई है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, इसके साथ में 1000 क्वेश्चन प्रॉम्प्ट, जैसे मैं भी लिख रहा था, जो क्वेरी हम जीपीटी से करते हैं इसे प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो 1000 से ज्यादा स्टैंडर्डाइज प्रॉम्प्ट मैंने बना लिए हैं। जो भी यूजर इसको सब्सक्राइब करेगा उसे 1000 प्रॉम्प्ट इस जीपीटी के हाथ फ्री कॉस्ट दिए जाएंगे। तीसरी चीज, अभी हमने इसको और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इसमें काफी सारे फीचर्स और इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जो आज भी सब्सक्राइब करेंगे उनको भी ये हारे के हारे अवेलेबल रहेंगे। तो कैसी लगी आपको ये जीपीटी? इसके इंप्रूवमेंट के लिए आपके कुछ और सुझाव है तो दीजिए। चौथी चीज ये है कि अभी तक चैट जीपीटी पे जाना पड़ता था, अब इस जीपीटी को यूज करने के लिए आपको चैट जीपीटी पे नहीं जाने की जरूरत। ये हमारी कस्टमाइज्ड जीपीटी है, ये केवल और केवल आपको bizgyaan.com पर ही उपलब्ध रहेगी और bizgyaan.com पर लॉगिन करके ही आप अपने सवालों को पूछ पाओगे। तो ये था एक ब्रीफ डेमो जो मैंने इस एआई टूल के बारे में आपको देना उचित समझा। कैसा लगा आपको ये डेमो, कैसा लगा प्रोडक्ट, मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट इस टूल के बारे में जान सके, इसे अपनी प्रैक्टिस में प्रयोग में ला सकें और लाभान्वित हो सके। इनकम टैक्स में हमारे अब चार टूल हो गए। फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स फेसलेस असेसमेंट जीपीटी, सेकंड वन टैक्स ऑडिट जीपीटी, थर्ड वन इज यूनियन बजट डिकोडर, एंड फोर्थ वन इज इनकम टैक्स न्यू बिल 2024 GPT. All these GPTs are available in our GPT store. You can explore from here. Thank you so much for joining me, listening me, and sparing your valuable time this evening for me. Thank you everyone to be the part of this webinar. Thank you everyone. Anyone want to ask any question? Otherwise, I will wind up the same. Anyone asked any question, want to ask any question, or we should wind up this? I am waiting for 1 minute more, otherwise we will wind up the session.
I think no one want to ask any question, so we are winding up the session. Thank you everyone for sparing your valuable time.